Okay, one more very typical type of numerical from Carnot engine. A heat engine performs 1000 joules of work. Very nice. This is the value of delta W, 1000 joules. Okay, and at the same time rejects 4000 joules of heat to the cold reservoir. This is the heat rejected, जिसको हम delta Q2 से represent करते हैं, तो this is 4000 joules. What is the efficiency of the engine? What is the eta? Okay, if the difference between temperature if the difference of temperature between the sink and the source is of this engine is 75 degrees Celsius. Now this is T1 minus T2. T1 is the temperature of source, high temperature reservoir. T2 is the temperature of sink, low temperature reservoir. और इन दोनों का जो difference है वो हमें बताया गया है 75 डिग्री सेल्सियस. Do not convert this temperature into Kelvin. ये already Kelvin की ही value है. You just have to write the Kelvin unit. क्योंकि difference in temperature Celsius और Kelvin पे same रहता है. बच्चे इसमें majority mistake करते हैं. तो पूछा गया है find the temperatures of its source and sink. दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ मालूम करनी है that is T1 and that is T2. These two things are to be find out. ओके सो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है देखने में. आप सिर्फ इसका डेटा देख के और फॉर्मूले देख के बता सकते हैं कि यू कैन इजीली सॉल्व इट. मेरा ख्याल है अगर आपको डेल्टा डब्ल्यू और क्यू टू मालूम है तो आप इस इक्वेशन से डेल्टा क्यू वन निकाल सकते हैं. और वंस आपको डेल्टा क्यू वन मिल जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. एफिशिएंसी आ जाएगी तो आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करके इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके टी वन माइनस टी टू ऊपर क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ गिवन है. और फिर आप वहां से पहले T1 फाइंड आउट कर लें और फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर से क्या मालूम कर लें T2. दिस इज द होल स्ट्रेटजी ऑफ द न्यूमेरिकल. लेट्स सी कि ये कैसे सॉल्व होगा. सबसे पहले यू विल स्टार्ट के सॉल्विंग फॉर Q1 डेल्टा Q1. तो ये हो जाएगा डेल्टा W इक्वल्स टू डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q1 इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q1 इक्वल्स टू 1000 प्लस 4000. That is equal to 5000 joules. हम सिस्टम को हम इंजन को 5000 जूल्स की हीट दे रहे हैं जिसमें से वो 4000 जूल्स रिजेक्ट कर रहा है और 1000 जूल्स हमें किसी काम के बना के दे रहा है. ओके, नाउ सॉल्विंग फॉर एफिशिएंसी ईटा. तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट इनपुट and efficiency. What do we are supposed to find out? Efficiency equals to 1000 upon 5000 and efficiency equals to 0.2. Again 0.2 is the decimal value. अगर आप इसको अलग से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं efficiency equals to 20% by multiplying 0.2 to 100%. Okay, now we have to find out the temperatures of high temperature reservoir source and low temperature reservoir sink. सबसे पहले आप चलेंगे from the efficiency equals to 1 minus T2 upon T1 and efficiency equals to, you can take the LCM, T1 minus T2 divided by T1. Now the interesting idea is ये T1 minus T2 ये हमें वहाँ पे given है पहले से. How much? 75. तो आपने लिखा 0.2 equals to 75 upon T1 and T1 equals to 75 upon 0.2 and T1 equals to 75 multiplied by 5 is 375 Kelvin. अगर आपको T1 मालूम हो गया 375 केल्विन तो आप T2 दोबारा यही रिलेशन यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें पता है T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 75 एंड T2 इक्वल्स टू T1 माइनस 75. T2 equals to 375 minus 75 and T2 equals to 300 Kelvin. This is the temperature of the sink and this is the temperature of the source. So this is how you're going to tackle Carnot engines numericals. Thank you very much. I will see you in the next video.